2024 शुरू हो चुका है और सभी कंपनीज जो हैं अपना रोड मैप लेकर इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर दिखा रही हैं। इस इवेंट में हमें बहुत कुछ खास देखने को मिला। हमें 2025 का पूरा प्लान क्लियर हो गया है, जो हम आपको अभी आने वाले कुछ मिनटों में समझा देंगे। लेकिन जो 3 गाड़ियां हैं ना, वो 3 गाड़ियां जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, क्विड, ट्राइबर और काइगर, इन तीनों में एक यूनिक प्रपोजिशन है। वो ये कि इन तीनों गाड़ियों ने अपनी कैटेगरी में एक बेंचमार्क क्रिएट किया, कुछ ना कुछ नया इंडियन मार्केट को दिया, और इसीलिए रेनो इंडिया एक बेहद ही खास कंपनी है जब हम बात करते हैं इंडियन ऑटोमोटिव स्पेस की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुदीप मल्होत्रा जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू। इट्स बीन ए प्लेजर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन रेनो इंडिया के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और आगे का रोड मैप अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि एवरीबडी लव योर कार्स एंड हाउ मोर they can expect from Renault India in the future. So thank you Nand for giving me this opportunity जो हम आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो आज सबसे पहले मैं 2024 की बात करूँ। राइट, सो 2024 शुरू होते ही हमने सोचा कि अब हम अपने जो रेंज को थोड़ा और नया करें। क्विड, ट्राइबर और काइगर आज जो हमने अनवील भी किया, हमने इन तीनों कार्स के अंदर जो इनकी जो यूएसपीज थी उनको देखते हुए कंज्यूमर्स के जो ट्रेंड्स इवॉल्व हो रहे हैं उनको मैप किया और उसी हिसाब से हमने नए फीचर्स डाले। वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेरिएंट्स एंड वी हैव आल्सो वर्कड अराउंड द प्राइस पोजीशनिंग्स स्पेसिफिक इन एरियाज जहाँ पे हम लोग नहीं थे जी। तो इन सब के करते देयर इज अ मच बिगर enhancement in terms of the playground that is on offer for us. So if I see in terms of Quid, with the enhancements that we are seeing now, Quid now offers the biggest and the most extensive dual tone range अपने segment में। जी। उसके अलावा with the new variant जो automatic version में हम लेके आए हैं, Quid becomes the most accessible automatic in the Indian car industry. Okay. And then Quid, of course, ये दोनों style और technology के हिसाब से थे. And then Quid also was always or has always been the more innovative amongst the small cars. So इस बार 2024 में हम जो उसका 8-inch touch screen है, we are bringing it into a variant which makes it again the most accessible variant for the Indian consumer with a touch screen which is capable for an Android Auto and an Apple CarPlay. So I think उसके अलावा Triber में जो changes हुए which we've talked about, Triber being a very very unique offering, उसके अंदर जो हमने we've enhanced technological features. We've got the TFT screen. We've also got a wireless charger now in Triber. We've got the enhanced the comfort with the driver armrest. So there are features galore, and I can keep on talking around. Absolutely. So what's been done is we actually democratize the whole segment. Absolutely. And in all these 3 cars, if I may say, there were a number of USPs. Yeah. So if I talk about Quid, it was the car that actually showed what is nanotechnology, right? Maybe at that time, nano was there, but the way it was being engineered was fantabulous. Then Triber came out with a different proposition, a 7-seater in this very range, ultra modular, absolutely, and और flexible. उसके बाद yes, और उसके बाद Kiger जिसने वो segment को ही पूरा redefine कर दिया, sporty, उस segment smart, stunning, yes. And of course we've enhanced Kiger as well in terms of new features coming in there, making it more premium with the leatherette seats and the leatherette steering, and adding features, enhancing or rather now adding 4 more variants in Kiger, making it more approachable in the EZR zone, which is our automatic version, and in the Xtronic CVT zone. So in total you made consumer the king now and spoiled him for choices.
और Yes, एक तरह से कंज्यूमर को आपने वॉइस दी है We- उनके चॉइसेस के मदद से, absolutely. And right? this is basically their voice. Yeah. So we've just worked upon that. सर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वॉइस ना, और आपकी जो यूनिक गाड़ियों की अगर बात करूं, इन सब की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं डस्टर से हुई थी, राइट? दैट्स व्हाट एस्टैब्लिश एवरीथिंग फॉर रेनो इन इंडियन मार्केट, एंड एवरीबॉडी स्टिल लव द प्रोडक्ट एंड एवरीबॉडी स्टिल आस्क अबाउट दैट प्रोडक्ट। मौका उसका नहीं है, लेकिन हम आगे के सफर की बात कर रहे हैं, और ऐसे में डस्टर के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। तो क्या कुछ आइडिया दे सकते हैं, कोई टाइमलाइन या फिर क्या है प्लान उस गाड़ी का? देखिए, मैं डस्टर पे तो ज़्यादा उल्लेख नहीं कर पाऊँ जी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले 3 साल तकरीबन में जी, हम लोग 5 नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे। जी, 5 मॉडल लॉन्च करेंगे, जिसमें से एक B+ SUV है, एक C SUV है और Right. एक इलेक्ट्रिक कार है, विच इज़ गोइंग टू बी लोकलाइज्ड। तो अब नेम प्लेट्स कौन सी कहाँ बैठेगी, इस पे अभी हम अंदाजा लगाते रहेंगे। I leave it to you, but yes, the nameplates are so. But we are going to be there with in the B+ SUV segments, C SUV plus, segment, and then electric also, yes, right? And this electric car that we are talking about is going to be completely localized, it has got to be localized. right? We are talking about SUVs, we are talking about electric. आपने जो रिफ्रेश किया है वो आपने छोटी गाड़ी में भी किया है। छोटी गाड़ियों का ये जो बाजार है, अब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इनोवेशन भी नहीं दिख रहा, और वहाँ पे ज़्यादा फोकस भी नहीं दिख रहा। सो व्हाट इज एन इंडियन कंज्यूमर सपोज टू थिंक अबाउट द स्मॉल कार मार्केट? इज इट गॉन, और इज इट गोइंग टू स्टे, और डू वी सी एनीथिंग न्यू कमिंग? Okay, so one of course what we see अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें स्मॉल कार सेगमेंट श्रिंक तो कर, जी, लेकिन स्पेशली द क्विड सेगमेंट, लेकिन with all the intent of democratizing style, automatics, technology, we would like to have a bigger bite of the pie. The pie may be reducing, but राइट, the bite is something that will. फैंटास्टिक। सर आपके आने वाली गाड़ियों के लिए, और जो आपने 2024 के लिए अपने रिफ्रेश मॉडल्स दिखाए हैं, उनके लिए आपको बेहद मुबारकबाद। और इसके अलावा आपने एक और नई चीज़ शुरू करी है, वो है आपका नया यूज्ड कार बिजनेस। क्या आप उसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं? So in fact जो आज हम बात कर रहे थे regarding enhancing brand love, used car business जो अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में, it is getting much more organized than it was maybe a few years back. ओके, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ यूज्ड कार्स जो है in the TIV, it is much higher than the new car sales on its own. So we had started working on used cars some time back, and now we are taking it into the next avatar and aligning it with our global brand name, which is Renew. So Renew is something which is not just limited to trade-in. So that is where this is going to be different in terms of customer offering, in terms of customer promise, and also in terms of what values it gives to our dealer business. So we would like to be the first one to come in the mind of any consumer who wants to sell his Renault फैंटास्टिक। after usage. And there are definitive promises around this new brand which we are going to evolve in this year. So this is part of our 2024 brand enhancement strategy. You'll also see something new in our stores, because we are now going to adopt this logo लोगों, on the physical stores as well. Right. So right now it was in the communication, but we will also have our new RVI, as we call it, into our stores this year. फैंटास्टिक। सर शुरुआत बहुत अच्छी लग रही है, और हमारी तरफ से मुबारकबाद एक बार फिर। और दर्शकों को पूरा क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि रेनो के इंडिया प्लान्स क्या हैं, कितनी गाड़ियां आने वाले सालों में देखेंगे, और इस साल कहां कहां पे बदलाव हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता दीजिए, जो सुधीर सर ने हमें नहीं बताया, नेम प्लेट, कौन से नेम प्लेट की आप वापसी देखना चाहते हैं रेनो इंडिया की तरफ से। नमस्कार।